Good morning, students. Today we are going to start our next geography chapter, lesson 5, agriculture. Students, in the previous chapters you have studied about the various resources like land, soil, water and plants. In this chapter we will study about the importance of agriculture and various types of agriculture and crops. Okay, so let us start the chapter with the concept, how the concept of agriculture begins. कैसे शुरुआत हुई? Students, as you know, food is the basic requirement of every human beings for their survival. We cannot live without food. तो food तो हमारी basic requirement है. Starting कहाँ से हुई? Students, in 6th class you have studied about life of early man. In the first stone age, early man was a food gatherer and he wandered here and there in search of food. Earlier human beings were dependent upon food gathering, hunting and fishing for their survival. Gradually they started growing crops near the river valleys. How they knew about the concept of agriculture? हुआ क्या? Accidentally. अर्ली मैन कोई फ्रूट खा रहा होगा और उसने वो फ्रूट ऐसे ही फेंक दिया इधर उधर, और क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद रेन हुई और उसके जो सीड्स हैं उसमें जर्मिनेशन हुआ और वहाँ पे प्लांट उग गया. जब एक्सीडेंटली ऐसा हुआ तो दे न्यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दे न्यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैलीज, which led to the beginning of agriculture. And students, it helped ancient civilization to flourish along the river valley. As you know, जितनी भी civilization है, whether they are Indian or belongs to other countries, जितनी भी civilization है सब river valleys के आसपास ही flourished हुई. Why they flourished near the river valleys? Because of the need of water for agriculture. Okay. Now come on the concept, what is agriculture? क्या है agriculture? In simple language we can say that agriculture means land cultivation, or you can say that cultivation of the land for growing crops. But in scientific terms, agriculture is the science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing. In simple language, agriculture is the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals. Animals को पालना. Why we rear animals? To provide food, wool and other products. हम animals पर क्यों depend है? Food के लिए, wool के लिए, milk के लिए, ठीक है? इसलिए ये this type of agriculture is known as mixed agriculture. Okay. Now come on the next topic, why agriculture is important for us. Basically agriculture is important all over the world. Why? Because most of the population of the world depends on agriculture for its survival, or you can say that for its livelihood. सभी लोग agriculture पर, क्योंकि food is the basic requirement all over the world. That is why agriculture is the major occupation of the people in the developing countries of the world. जैसे अब as you know इंडिया में major occupation क्या है लोगों का? Agriculture. 70% Indians, or you can say that our farmers engage in agriculture. Okay, अब developing countries क्या है? Developing countries are those countries they are growing in various field. They are growing. अभी हम progress कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या है? वो प्रोग्रेस कर चुके हैं. ठीक है, तो मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का है. ओके, और इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बैकबोन है हमारी. क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अर्निंग एग्रीकल्चर से होती है. जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं. तो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर country. Students, agriculture supplies food to the people. Not only supply food to the people but also create market for tractors, threshers, harvesters, fertilizers,
pesticides and other agriculture with modern techniques, industrial products. अब एग्रीकल्चर अगर होगी तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए, टेक्निक्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए. तो ये एक मार्केट बनाती है. अगर एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं तो उसके लिए इन सब की मार्केट भी बनानी पड़ती है, विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड इट इरेडिकेट्स पॉवर्टी. ओके, एंड इट एनहेंस और यू कैन से दैट इंक्रीज ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज. एग्रीकल्चर स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशंस. दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बनते हैं. कैसे? बाय ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, जो बिजनेस हमारा होता है, वो क्या करता है? इट इंक्रीज अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, I hope you have understood the topic, definition of agriculture and why agriculture is important all over the world. Okay, after listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.